नमस्कार। साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत अभिवादन करता हूं। आप सबको आज मैं लेकर के चलता हूं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के रूम नंबर 2 में, जहां पर वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन जो किताब है स्विमिंग की, उसका विमोचन है। जी हाँ, वीके पाहुजा भारत का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सुविख्यात नाम, जिसने तैराकी की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जी हाँ, वीके पाहुजा यानी वीरेंद्र कुमार पाहुजा, जो कि सिंध प्रांत में 16 नवंबर 1945 को उनका जन्म हुआ और पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली दिल्ली आ गई। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की और शिक्षा के दौरान ही उनका विशेष लगाव फुटबॉल और स्विमिंग में रहा, जिसके चलते दिल्ली स्तरीय, भारतीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया और भारत का नाम रोशन किया, जिसमें विशेषकर स्विमिंग की दुनिया में उन्होंने कई मकाम हासिल किए। और उन्हीं के जो कार्य के जो खेल की दुनिया में जो उनका योगदान रहा, उसी के चलते हर वर्ष उनकी पुस्तक यहाँ पर रिलीज की जाती है, जो कि आज 42वां एडिशन यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। उस किताब का विमोचन है। जी हाँ, वीके पाहुजा जो कि अपने जीवन काल में अपना खेल और कला जगत के प्रति उनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने हमेशा खेलों को और कला को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए। जो खिलाड़ी थे, जो कलाकार थे, उनको हमेशा से उनका उत्साहवर्धन किया। उसी के चलते आज उनका नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात है। मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र कुमार पाहुजा जी के जीवन काल में उनके विवाह पश्चात उनकी धर्मपत्नी कोमल पाहुजा ने भी हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और आज वीरेंद्र पाहुजा, कोमल पाहुजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां प्रियांक पाहुजा, सुप्रिया पाहुजा और मीनाक्षी पाहुजा अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाते हुए लगातार उनकी याद में हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं। वीरेंद्र पाहुजा जी जो कि खेल जगत और कला जगत को बहुत प्यार करते थे, खिलाड़ियों को और कलाकारों को उनके प्रोत्साहन के लिए समय समय पर कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते थे, जिसके चलते उनके बच्चों ने वीके पाहुजा फाउंडेशन का निर्माण किया और उसके अंतर्गत वो हमेशा कलाकारों को, खिलाड़ियों को अवार्ड देकर सम्मानित करते रहते हैं। और वीके पाहुजा जी के मरणोपरांत लगातार उनके जो स्विमिंग में जो योगदान थे और स्विमिंग में और भी जो भारतीय जो खिलाड़ी हैं, उनके योगदान को लेकर के उनके नाम से किताब प्रकाशित की जाती है, जिसका आज 42वां एडिशन यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट हैं वो जितेंद्र सिंह जी हैं, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे वो है प्रोफेसर ए.के. बक्सी, जो कि वाइस चांसलर हैं PDM यूनिवर्सिटी से, प्रशांता कर्मकर हैं जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, प्रोफेसर किरण वालिया हैं जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, श्री भानु सचदेवा हैं जो कि अर्जुन अवार्डी हैं और साथ ही श्री रंजन सौंधी जी हैं जो कि खेल रत्न अवार्डी हैं। और मैं आपको अब सीधा ले चलता हूँ रूम नंबर 2, जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली का ये रूम है। इसके अंदर इस किताब का विमोचन होना है, तो आइए आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाता हूँ, लेकर के चलता हूँ। And all of them have represented the country. सबसे पहले तो मेरा नाम आमना सिंह है, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच, ऑथर और आज की सूत्रधार हूँ मैं इस इवेंट के लिए आपके लिए। So as you all know, we are gathered here today for the 42nd edition VK Pahuja Ji's Swimming Statistical Bulletin, which is quoted as the Bible for the lovers of the sport, lovers, and is also seen as a benchmark for coaches, enthusiasts, swimmers across today, globally. एक शेर याद आता है that hails as that gratitude affirmation, because बहुत selflessly I think उन्होंने जो भी किया है, right? So they say that वो जो मुमकिन ना हो, मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है।
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीके पाहुजा जी की रिमेंस में और उनकी मेमोरी में आई थिंक वी ऑल शुड एक्नॉलेज एंड वी शुड अप्रिशिएट द सेल्फलेस सर्विस एंड द लेगेसी ऑफ हिज लाइफ व्हिच इज फोर्ज्ड अहेड फॉरवर्ड बाय डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा जी, डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा एंड मिस्टर प्रियांक पाहुजा एज वेल. सो इट गोज फॉरवर्ड दैट करने की जो क्षमता है वो आई थिंक हम सब में होती है, बट वो विलिंगनेस कितनी है वो बहुत मैटर करता है. सो kudos to everybody who's doing it and taking the legacy forward. So a little about Mr. Virender Kumar Pahuja ji. He was a sportsman, dominated the Delhi state in football, swimming at national level and water polo at the international level. He was a recipient for the best sportsman award by Pandit Jawaharlal Nehru ji. He had dedicated selflessly himself to the field of aquatics and impacted life by supporting dreams of many and empowered so many. So the difference between the good and the great is that they're separated by the willingness to sacrifice for nothing else but oneness. So kudos really to keep the light burning, ma'am, and the siblings. Congratulations. So not taking much time because we're slightly late. Yes, I know we're running late. So I'll call Dr. Meenakshi Pahuja to take it forward, but I'd like to extend a warm welcome to our chief guest, Shri Jitendra Singh ji, who's the former Union Minister State for Youth Affairs and Sports, Minister of State Defence, and also a very warm welcome to our guest of honors, Professor A.K. Bakshi ji, Professor Kiran Walia ji, Ranjan Sodhi ji, Bhanu Sachdeva ji, and Mr. Prasant Kumar ji, and many other distinguished guests who are with us right now. So Dr. Meenakshi Pahuja, over to you. Thank you, Anna. Indeed, it's a very special morning and it's very special and very close to my heart because I know what my father started, what was his vision and what was his service to the sport. And I'm very, very, very grateful to all of you to be here on a working day for this release function. I'm very honored to have Jitendra Singh ji as a chief guest who has been the sports minister of our country. He's looked after the defense, the sports, and he himself is a sportsman. Recently, I visited Mayo, and I must share, the person sitting here is coming from the royal family of Alwar. And such a humble way he is, always, with the folded hands. In the school I visited, I was amazed to see hundreds of young girls early morning 6 o'clock playing sports. And what touched my heart was the beautiful swimming pool on their campus at Mayo. And it's just not about women, it's about the rich culture of the men Mayo also. So I really appreciate the work that you're doing in silence. It's the transformation of education, sports, and a very holistic approach of life. And we have people like you who started all this. I would say your grandfather who laid the foundation. And here is one young swimmer who has come today from Rajasthan. So somewhere it's a ripple effect, that it transforms, and the ideology of people, parents, to educate their girls and bring them in forefront. It is a very big step for women empowerment. I deeply appreciate that. And we are joined by the sitting Vice Chancellor of PDM University, Professor A.K. Bakshi. You must be wondering why Professor Bakshi today morning. He is a young scientist, and I must share with all of you. I have been dreaming of swimming in Antarctica. In an era of 80s, he had been a young scientist, went on an adventure to Antarctica to, study the whole thing. So there is so much which goes along with education and sports, and his own ways, the way he is promoting sports in his university. Thank you so much, sir, for having that sensitive heart for sports people. And nice, we have Mr. Sitaram Sahu. Now, Sahu sir is someone who has played 2 Asian Games for our country. The man will never speak about himself. He has served the top chair of Delhi government. He's taken care of Delhi government sports. He's still looking after all the swimming pools and the way things run in the Delhi when it comes to swimming. So thank you for taking out your time. We are very blessed to have all of you with us. Among the gathering, we have Mr. P.D. Datta, the senior most official of diving in our Indian swimming. We are joined by Mr. Parthu, who is the head coach of Glenmark International Sai Academy, Mrs. Chanda Ray,
She is the women coach of the Sports Authority of India, a senior coach, and she has been serving for a very long time. Mr. Devu, who is again with Delhi Police, and we all know the South Delhi Championship. He's made such a grand success, doing all by himself. We're very happy to have all of you here. Yes, and I will now request my brother and sister, Dr. Supriya and Priyank Pahuja, to please welcome our chief guest, Mr. Jitendra Singh ji. Sir, come here. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's really thoughtful. Now I request to welcome Professor A.K. Bakshi. A formal welcome. Thank you, Professor Bakshi, for being here. I know how difficult it is on a working day for a sitting Vice Chancellor to come all the way. I request you to please welcome our very own Sitaram Sahu sir. And I must tell you, in that era to play Asian Games was not easy, in an era of 80s, when you had such less facilities. Supriya, can we welcome Datta sir also? He's right here. And I must tell you, we all address him the youngest man in Indian swimming. आप लोग मुझे बाय नेम याद कर लेते हो, बस वही रिसेप्शन बेस्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। इसको आप नहीं रखिए, जाते टाइम देखिए। Thank you. Now, I request Jitendra Singh ji to please say a few words. All we're looking forward to hearing you, and then we move on. Yeah. Honorable Professor Bakshi Sahab, Vice Chancellor. Manch par we have Sahu Sahab, Datta Sahab, and of course our very own Meenakshi ji and friends. Today, as Meenakshi ji said, today is a very, very special day. A very, very special day for Meenakshi ji, a very, very special day for all the sports persons, swimmers, and all of us here. This is the 42nd edition of the bulletin, which PK Pahuja ji had started, and it has carried on since. During the pandemic, where presses were shut, printing couldn't be done, the designing couldn't be done. I don't know how you managed to have the press opened, printing done, and without fail, on any calamity, the bulletin came out. As we all know, the pandemic has taken a toll on literally everybody, but more so in the world of sports and sports persons. And as ma'am had spoken earlier, that the bulletin is also referred as a Bible for swimmers, which is very, very true. And Meenakshi ji, we are all very, very proud of you. We all look up to you. The swimmers look up to you. The whole sports fraternity looks up to you, because the inspiration which you have. And if I have to read out all the great achievements which you have done, it will take me many, many years. I think all of us are a family, we all know. But more than that, it is, I'm privileged to be here, I'm honored to be here. And your family and I have a very old relationship also, which I'd like to share with
the audience. A 30-year-old relationship, because your late father had taught my wife at modern school. Yes. So we all know him as a swimmer, a sports person, but he was a great teacher too. And then, ma'am, of course, you have also taught my daughter Janki at Lady Shri College for women. So of course we have a bonding together. As I was discussing a while ago with Professor Bakshi, and we were talking about sports and the challenges what sports in India has to face in the future. We were talking about swimming. Swimming has, of course, a long way to go. A breath of fresh air came when I came to know that there are now national camps which are being organized, and not only not a camp, a center has been designed, and the center is up and running, where children are studying in good schools, they are living on the campus, they have all the latest facilities, they have good training. But I think the future needs to be of how one can identify talent, nurture talent, and take sports to another level as a career. I used to be the sports minister for not a very long time. Before that I was in the Ministry of Home Affairs, and then I was moved to as Minister of Sports and then Defence. So the challenges which we faced by looking at all the other models around the globe, may it be China, may it be Germany, may it be Japan, the US model, the French model was very, very interesting. And with this large population, with this large talent which we have, there is always a big issue of identification of talent. And somehow, by many examples I can quote, but I think I'm going to keep it short, where even identification is done by just by default or by mistake. Somebody suddenly comes up there just by default. So that has to be completely structured. There has to be a process in place where we identify the talent. And the mindset in rural India needs to be changed considerably. I remember गांव में कहीं जाते हैं, कोई बच्चा अच्छा दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वहाँ एक तालाब होता है उसमें स्विमिंग कर लेते हैं, तो वहाँ उसको शाम को आते हैं तो उसको पिटाई और हो जाती है, ये अच्छा खेल कूद करो, पढ़ाई पढ़ो, बस दिमाग किताबों पर लगाओ, तुम घर से जाना बंद. तो इस तरह का एक माइंडसेट हो गया है, which has to change very fast. So there was a program which we had designed, and I'm sure that Khelo India and other government entities are going to take care of it. And then of course one has to say that this is, if we are a sportsman, this is how your career is going to be. Like people want to run into the Indian Administrative Service or Indian Police Service or Indian Revenue Services. Why can't one think of going into sports as a career and gives you those dollars? So, I mean, I'm hoping that one day that will happen. But in many countries that has happened. And we will have to move towards that model. We will have to strengthen our sports medicine. That's something which in today's competitive sports we are still lagging behind. But I'm sure things are changing very fast now. 10 years ago, when you were young, you were aspiring to be reach new levels, one could even think about sports. People would laugh at sports. When I was in school, the maximum sports one had was for 2 periods, and that's it, and nothing more than that. So the mindset has to change, and it will change. We have very important people in this gathering here today who will be the ambassadors of change. So I'm not going to take too much of your time, ma'am. Thank you very much. I'm really honored to be here today, and keep up the good work. And we look forward to the 43rd edition of the Bulletin next year. We all will be waiting for it. Thank you very much. Thank you very much, Jitendra Singh ji, for your inspiring words. And
I'm sure the message that you're leaving behind will hit the thinking process and think the mindset of people present here. And rightly you said there are people who are working for sports and for swimming. They will carry this along. And I'm sure the message travels far and wide. And I'm sure these young swimmers will remember these words when they swim, and they're going to be carrying our flag. And I'm sure there are already international swimmers already from different parts of the country here. I'm sure these girls will remember the inspiring words. And somebody like a minister who has served on the top position of the country says where we lack, what is missing, those gaps have to be bridged by people like us who are working for sports. We all can contribute in our small way to bridge up the gap. Thank you so much, Jitendra Singh ji. Can I request Professor Bakshi to say a few words, sir? Good morning, everybody. Esteemed Shri Jitendra Singh ji, former Union Minister of Sports and Youth Welfare, and also the former Minister of Defence, Sitaram ji, Dr. Meenakshi, your sister Priya, and brother, and distinguished delegates. It's indeed a great honor and a privilege to be a part of this very important event, which marks the release of the 42nd edition of Shri V.K. Pahuja's swimming bulletin. I'm attending this for the first time. And you know, Meenakshi has been always pressing me that I should come and be a part of this event. This event has certainly helped me a lot, because I read something about Pahuja Sahab, then what this bulletin has been all about. And you know, I have a special regards for Dr. Meenakshi, whom I know for the last almost 15 years. When I was director of Institute of Lifelong Learning in Delhi University, and she was teaching in Lady Shri Ram College, she used to come to us and be a part of our team. You know, that was an institution which was introducing e-learning at the national level. And she wanted to do something in regard to the sports. There I came to know about her, you know, experience, her swimming, you know, achievements and all that. And since then we have been very much in touch with each other. I'm very happy that although I have never met Pahuja Sahab, but I can very well imagine, and I have read a lot about him. He has been a great person, and the very fact that after his death, you know, his daughter is carrying the legacy of her father, and that also in such a big way, that speaks of the love and affection the children have for their father. So I also take this opportunity to pay tribute to late Shri Pahuja Sahab, and I am very sure, as Shri Jitendra Singh ji also said, that this bulletin will keep on coming every year and will be a big guide for the entire sporting community in the country. So I wish them all the best. As Shri Jitendra Singh ji pointed out, you know, our performance in sports still needs to be, you know, improved considerably. There is no dearth of talent in the country. I remember when 1984, when I was selected for India's expedition to South Pole, Antarctica, you know, we had never thought. But then the government invited some people, scientists who could do some work at Antarctica. And I applied. I remember at that time we had to go through some process, and then we had a formal training at high altitude warfare school in Jammu and Kashmir, and after that a tough competition, and that is how we were selected. Although I never had any, you know,
sporting achievements to my credit, but only thing was that it was from the scientific point of view. And we built the station there called Dakshin Gangotri. That was built by our expedition. And after that I have taken a lot of interest in these sporting activities, and I fully agree with what Shri Jitendra Singh ji said, that there is no dearth. We need to identify the talent at a very young age, and then we need to nurture them. The same thing I feel even in academics. Although I have been in academics for a long time, and I feel, as I was mentioning it to him also, that we need to change our system of education also. Our education system still focuses on examination, rote learning and scoring high marks. That's not going to pay in the present day world. We need creative minds. We need people who can come out with new ideas. We need leaders, not followers. As I was mentioning, sometimes it worries me as a scientist why no Indian scientist working in India has been able to get a Nobel Prize after 1930, when C.V. Raman got it. 90 years have passed. So we need to really look. We need to channelize the energies of our young people on the right path. I think that's the need of the hour, not only in science and other academics, but even in sports also. And I'm very sure a day will come we will be at the top in the field of sports also. So I once again thank the organizers for inviting me to be a part of this very important event. I congratulate Dr. Meenakshi for organizing it so well, and I wish her all the best. And personally, I also feel that she has a long way to go in her career, in her sporting career in swimming. And I wish many achievements to her in the years to come. All the best. Thank you very much. Thank you so much, Professor Bakshi. Rightly said, yes, the young minds are going to carry the legacy forward. I'm sure they'll think, they'll get inspired. Now I request Sahu sir to say a few words. I know you hate speaking, but just a few words. Morning, everybody. Respected Honorable Minister Jitendra Singh ji, Professor Bakshi, Datta sir, Dr. Pahuja, Meenakshi. No, we have been knowing this family. Her father and my father both friends. They were in the field of swimming, which has made my career also. All have been said by these two great speakers about sports. I agree with it. We have talent. We nurture it. But we have to achieve now. And we got young talent sitting here. They have been guided by the coach. They are giving us results. The government has got policies. Delhi government has come up with many more policies now. We are setting up a university. We will be keeping around about 20 to 30 kids, children, school children, in a reasonable place and give them education and sports. So government is going in a big way. Only thing is that parents has to also contribute here. And I know we can achieve. We've been doing so. That's all. I congratulate Dr. Meenakshi for the book. I've been part of it every year, and I look forward to being in the future. Thank you. Thank you so much, Sahu sir. I think the time has come that we unveil the book, the 42nd edition. All have been waiting for it.
swimmers who are making the country so proud. They have been nurtured under the able leadership of the head coach, Mr. Parthu, and the lady coach right here, senior coach Chanda ma'am. Can I please request Parthu sir to be here? Chanda ma'am, please be here. Thank you. The first swimmer. Okay, sure. Thanks. The first swimmer that I called upon to honor is Firdaus. She comes from Rajasthan. She has made the country very proud. She's already played for India in this young age, and she's a part of the Sports Authority of India and World Marathon. Firdaus, please come. Come. All the best. Next is our very own Bhavya Sachdev from Delhi. Bhavya has played the Asia Pacific. She's been winning medals. We're very proud of you, Bhavya. Thank you for being here. All the best. Carry on. Thank you. अच्छा अच्छा The youngest is one of the nationals in Rajkot. She's in Rajkot now. The next swimmer we honored is Astha Chaudhary, and she comes from Assam, already an international swimmer of repute. She knows the national record best performance in the repute. That's also my state. That's also my state. All the best. So are you proper Sixnagar itself? And all-time best butterfly. She's tough. The next swimmer we honored is Shubhrati. She is from West Bengal. She's a part of this Landmark Academy. She has been making waves for a long time in our Indian swimming. We're very proud of her. We all swim for Delhi now. Last but not the least, we have Mahi. She is all the way coming from Bihar, again a part of this Landmark Sports Authority Academy. Already playing for the country and winning medals regularly at the national level. We are very proud of you. Girls, can we request all of you to join for a group photograph, please? Please come here, guys. Come. 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 I'm slightly taller than you, so I'll come here. We'll all एक स्टेप नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे आ जाओ। हम लोग थोड़े पास आ जाएंगे। Sir, आ जाए। Let's give them a big hand. They are our future. all the best. We have another set of swimmers coming from South Delhi, who are nurtured by our very own Devu sir. Vicky is here and another Priyank is here. Priyank is an international swimmer. Acha. His butterfly is like a lot of hope, and he's also done All the best. NIS, so he is qualified to be the coach. Come. आओ जी प्रियांक जी आप यहाँ पे आओ. All the best. Acha. Acha. Thank you. Jitendra Singh ji will take little more time of yours. I know you're super busy. But Colonel Atul Chaudhary is here. Atul ji, he's the first batch of students my father taught at Morton. Oh. Namaskar. What year was that, sir?
the story he helped my mother. There is a third story which I shared later. I am related to the Dawais. We talk about Yashwant Singh, I don't know. Yashwant Singh of Akbar. You were here also when I served it as well. We talk about it. Itarana? And I served and I am relation with the Dawais. अच्छा दवाई अपने आपसे रिश्तेदारी हो गई। हो गई हो तो फिर नाउ आई Thank you. I'll fail in my duty if I don't call upon the senior sports journalist sitting right here. Sajwan ji, please come. Rajesh Rai ji, very senior sports journalist, he's taking care of media and the news. Oh, excellent. Namaskar. Personally, to be here on a working day, thank you so much, Rajesh ji. These make the change. Yes, and we have Kushagra Rawat's father here because Kushagra is in right now Hungary playing the World Championship. Rawat ji, aap please aayenge. His son also qualified the challenge for Tokyo Olympics. He is one of the leading swimmers, holding India's best performance also in his name. The long distance. Yeah. Long distance. Difficult even. Please convey our. He's from where? From Delhi. native place of Uttarakhand. And Kushagra did his graduation from SRCC. Oh, Yeah. Thank you. हुडा जी, आप भी प्लीज आइए. मैम, प्लीज आइए. हुडा जी के लिए, इस परिवार के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी. अच्छा, अच्छा, यस, कब रिटायर हुए आप? अच्छा, I was there. So, जितेंद्र सिंह जी, हुडा जी की फैमिली जो है, इनका इकलौता बेटा कार्तिका, and he was very talented. मैं उसको खुद as a manager भी दिल्ली पर लेके गई थी. We lost him to heart ailment. Very young, he was a pilot. But this family is continuing his name. Every year they organize a water polo championship because he was a very talented water polo player. Both the parents are here. Yeah. The commercial or? So this family's contribution is immense in silence they have been doing. We have with us the former Secretary of Association of Indian Universities, Professor Gurdeep Singh ji. Sir has served a very long tenure, the man who runs the university sports. Please, sir. I've been taking care of her. How nice. How nice. She has been taking care of her. Thank you, Gurdeep Singh ji. We have a budding para swimmer with us, who is a student of DPU. Oh, how nice. He aspires to be the country's pride one day. With lot of dreams. Other people were involved with the para states and association and all. Yes, sir, it's about to get. Resolved? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Such a challenge. All the very best. Again, we have senior coaches, good coaches who are here. Shiva Didi, and please, aap bhi Able bodies don't do it. Please. They do it. No, parents are taking it far. Very amazing. मैम, आप भी आइए.
of the Delhi government. अच्छा Another 25 schools around Delhi. wow And more buildings. that's really nice that at least they're taking interest. Yes. And her son is a very strong swimmer. Yeah. In fact, very good swimmer, doing very well. माँ की बात कर रहा आज और रणबीर आप रह गए. Sorry. He's a young coach, recently joined Sports Authority of India. अच्छा Working for the last 3 years. We must encourage the young talent. range. This girl who is last year started shooting. And 1.5 years, she became a good and got a silver medal. First all time. सर, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, हम जो 2 कोचेस को ऑनर करना भूल गए. आइए प्लीज पार्थ जी, चंदा मैम प्लीज आइएगा. एक छोटा सा हमारा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है आप दोनों कोचेस के लिए जो इतनी सेल्फलेसली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट निकल के आ रहा है. आज ये बच्चे लीडिंग स्विमर्स हैं. जब रिकॉर्ड बुक को अपडेट कर रही थी तो बड़ी खुशी हो रही थी देख के. Huge complex for residential and things in Calcutta itself. In Yuva Bharati Stadium, There's a huge complex which has been made. Yeah, that time the secondary sports, I didn't have time to inaugurate, so I sent him to inaugurate it. PK Devi is also from Bengal. PK Devi used to be there as secondary sports. But the swimming pool is not functional for academic purpose. Yes, they are training happening, not to the structure what we expected it to be. I'm hoping in future it will happen. Thank you. Madam. Thank you, Chandana. Thank you so much. Now I have to acknowledge the presence of Amna, who has been writing a lot on social issues and everything. She runs a campaign, the She Rise, which is one of the leading journalists when it comes to women empowerment. Thank you, Amna, for being here. Your presence is highly acknowledged. Thank you so much. Now I request my brother to please hand over a token of gratitude to our Honorable former Minister, Jitendra Singh Ji. Thank you, Jitendra Singh Ji, for being here. It was a pleasure. Very grateful because when I went to Mayo, it really touched my heart that all the students out there are learning how to swim. It's mandatory. This is like life skill. It's just not about health, fitness. It is for life safety also. I think you're empowering all of them because I personally just visited Mayo, so I saw that. That was great. Okay, now we need to hand over a token of gratitude to Professor Bakshi. And a token to our very own Sahu sir, who will always be shying away from everything. Thank you, Sahu sir. Means a lot to us. You all are here. Thank you. We have arranged a high tea for everyone. Please join us over a cup of tea. Enjoy the snacks. Adya ji, sorry, आप भी please आइएगा. Adya ji is working, leading sports nutritionist. He owns a company and he likes to promote athletes. Please come here. We acknowledge your presence. Thank you, Adya ji, for coming here. Thank you very much. Thank you.
Thank you, everyone. High tea is ready. Let's all proceed there for the high tea, please. Thank you. हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस मिस्टर जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। आज के जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसके बारे में और जो तैराकी के बारे में उसके बारे में हम जो विद्यार्थी कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स बुलेटिन जो उसका सेकेंड अंक सामने आया है और पिछले कई सालों से पीछे पूजा जी साहब का एक सोच थी इस तरह से गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएगा और इसके साथ जो ये आज तक निकलती है वो एक बहुत बड़ी रेफरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव गाइड करती है, उसको गाइड करती है, मोटिवेट करती है। मीनाक्षी जी को मैं बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ समय पहले यही बात कर रहा था कि बहुत जरूरी है आज हमारा देश के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, लोग इतने ज़्यादा छुपा हुआ जो एक है टैलेंट हमारे पास है, आइडेंटिफाई करें। आज तैरने की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव के अंदर छोटे तालाब होते हैं, बहुत अच्छा तैर लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं उनको ढूंढने के लिए, वो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सकते हैं। तो आज एक सिस्टम की जरूरत है कि हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनको हम अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा न्यूट्रिशन दें, स्पोर्ट्स मेडिसिन दें करें और खास तौर पर उनका एक माइंडसेट बदलें कि स्पोर्ट्स एक करियर के रूप में भी देखें। जिस तरह से हम कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं या प्राइवेट नौकरी की तरफ देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ देखते हैं, आर्मी की तरफ देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ भी देखने का एक मन बनाना चाहिए। जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में था हमने एक इसकी शुरुआत की थी और मुझे उम्मीद है कि आगे सरकारें हैं वो इसको बढ़ावा देंगी। सर आप अपने समय में खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भी एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि मैं भी एक तरह से एक टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट को हमने बस किसी ने एक बंदूक दे दी और दुबलाबाद शूटिंग रेंज में शूटिंग करने लगे और कुछ ही घंटों बाद प्रैक्टिस के बाद मेडल आया तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जमकर आप मेहनत करिए, अपना टैलेंट निखारिए, जो लेटेस्ट जो तकनीकें हैं उनको आप अपनाइए और उसके साथ साथ अपने जो परिजन हैं, फैमिली है, उनको आप एक तरह से कंसिडर करिए कि स्पोर्ट्स के पर अच्छे खिलाड़ी बनने के बाद आसान जैसी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पास जो प्रोफेसर बख्शी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताएं सर इस कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम मालूम हो 42nd एडिशन स्विमिंग बुलेटिन की जो कि वीके पाहुजा जी के नाम पे है वो आज रिलीज की गई है। और पाहुजा जी एक बहुत ही एमिनेंट कोच थे, उनका स्विमिंग और स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और ये बुलेटिन उन्होंने अपने जीते जी शुरू किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी जो डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा जो कि रेडिशियन कॉलेज में पढ़ाती भी है फिजिकल एजुकेशन की, उनकी बहन और भाई सब ने मिलकर इस लेगेसी को जारी रखा है। तो ये बुलेटिन है, ये एक बुलेटिन ही नहीं, एक तरह से बाइबल है जो कि स्विमिंग और अन्य तरह की एक्टिविटीज के लिए एक बहुत यूजफुल गाइड है, नेशनल इवेंट्स के लिए भी और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। तो ये एक अपने पिता की जो लेगेसी है उसको कैरी करते हुए डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम उनको इस सब चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आज कहा गया और फील भी किया गया कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इसमें किसी भी तरह से टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
सिर्फ एक चीज की जो कमी है कि हमें टैलेंट को पहचानना बहुत यंग एज पे और फिर उसको एनकरेज करना, नर्चर करना, ताकि वो बड़ा होके या लड़की हो बड़ी होके देश का नाम वर्ल्ड लेवल पर अचीव कर पाए। तो मेरे ख्याल में ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। जैसे मीनाक्षी आप भी अपना देखिए वर्ल्ड लेवल पे इतना इन्होंने अचीव किया है और आगे भी बहुत कुछ सोच रही हैं कि अंटार्कटिका तक जाने का, तो ये भी एक बहुत बड़ी है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वी विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय। और आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं उन नन्ही सी लड़कियों से जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक बड़ा मकाम हासिल किया है स्विमिंग की दुनिया में। तो खुद ही आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उनको भी जो आपकी फील्ड में जो तैयारी कर रही हैं जो लड़कियां, उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम फिरदौश है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पे 2015 से दिल्ली में जो साइकी एकेडमी है वहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। और यहाँ आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा, साथ ही साथ मुझे मतलब अच्छी ट्रेनिंग मिली है यहाँ पे। और मैं 2018, 19 और 17 में जूनियर नेशनल में गई थी। और मैं बस जो साथ में ट्रेनिंग करते हैं उनको यही बोलूँगी कि कभी गिव अप मत करो, अपना लास्ट तक अपना बेस्ट देते रहो ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट न रहे। हेलो, मेरा नाम शोभा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दार्शकर हूँ। मैं 2017 से साई में हूँ और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा खुद का दुश्मन हम खुद होते हैं। हम जब तक खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं, हम तब तक नहीं कर सकते। अगर हम खुद से डिसाइड करेंगे कि हम करेंगे तो हमको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि खुद पे हमेशा भरोसा रखना कि सब मोटिवेशन देंगे, सुनना लेना, लेकिन खुद का हमेशा पहले सुनना। बहुत बड़ी बात है कि खुद की सुनो और अपने दुश्मन को जो खुद आपके अंदर है उसे पहले हराओ। जी। मेरा नाम भव्या सिसदेवा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। 2017, 18, 19 जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 2020 में ही मैंने टाई सेंटर ज्वाइन किया। एंड मेरा अभी इसी साल अप्रैल में बैंकॉक स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज आए और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आस्था चौधरी है, मैं आसाम से हूँ और मैं साई में 2015 से हूँ। राष्ट्रीय मुझे जूनियर नेशनल्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला और सीनियर्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला। मेरा नाम माही श्री है, मैं बिहार से हूँ। मैंने रिसेंटली अकेडमी ज्वाइन की और मुझे यहाँ का ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा पसंद आया। मेरा नेशनल जूनियर नेशनल 2019 में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज रहा। थैंक यू सो मच। और आप सभी को आपके और भी बेहतर भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। सांची बात की ओर से थैंक यू सो मच। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मिसेज चंदा बरुआ जी से, जो कि राष्ट्रीय स्तर की कोच है स्विमिंग की और जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ही बच्चे हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। मैडम बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को बताएं मैडम कि किस तरह से आप कोच करते हैं बच्चों को। अभी हमारे साई फाउंडेशन में एक एकेडमी जो नेशनल एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें मैं सीनियर पोस्टेड हूँ। हमारे इसमें 6 कोचेज हैं स्विमिंग के और कंडीशनिंग कोचेज है 2 फिजियो है और स्ट्रोक एनालाइजर भी है। इससे मिला के 35 बच्चे की एकेडमी में कोचिंग चल रही है। पूरे साल एकेडमी में रहते हैं, सर्टिफिका एजुकेशन वगैरह सब कुछ चल रहे हैं। बच्चे इंटरनेशनल में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एकेडमिक थ्रू से और ऑल ओवर इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टाइम कुशल रावत वर्ल्ड चैंपियनशिप और चैंपियनशिप के लिए गए हुए हैं हंगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम आपके जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो उसके अंतर्गत जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो कुछ बताएं। अचीवमेंट्स तो इंटरनेशनल बच्चे के
एशियन एज ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चों को मेडल है। और इंटरनेशनल पे शबरा रावत ओलंपिक मीट में भी क्वालिफाई किया था और उसमें और नेशनल में हमारे बहुत सारे मतलब 35 बच्चे अबाउट 20 उनके सारे सबको नेशनल में गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल गर्ल्स बॉयज दोनों ग्रुप में। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में हमारे एक भाई हैं जो जुड़े हुए हैं पैरा ओलंपिक से हैं। और दूसरी बात ये है कि पैरों से अभी दिव्यांग है ये, और इनका जो हौसला और जो जज्बात है और जो पैरा ओलंपिक में अभी जो इनका एडमिशन होने वाला है, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूं और देखते हैं उनके जज्बात और जो नव युवकों की जो प्रेरणा मिलेगी वो हम इस अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को देना चाहते हैं। तो हमारे साथ में नाम बताइएगा आप अपना। My name is Meerumed Mirzada. I am current student of DTU, Delhi Technological University, doing my course in Information Technology IT. So मेरा नया एडमिशन होने वाला है पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग के रिलेटेड। या लाइक आई हैव बीन playing and doing the training for swimming for more than 3 years, unofficially, not officially. So I am very glad to have like a meeting like here and also getting admission for the Paralympics, being official player of India. It will be too grateful for me. And also there's not only swimming, like also from the point of football, I have been playing football for more than 12 years. Like totally we can say like I have been an athlete for the Olympics for more than 15 years. So I would like to do my football careers also with swimming together. सर मैं ये कहूँगा कि आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस अपने हौसलों को जो है वो बिल्कुल एकदम छोड़ देते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो हार मान जाते हैं। उन युवकों के लिए क्या कहेंगे जो दिव्यांग भी हैं और वो आगे बढ़ना नहीं चाहते? जहाँ तक सर ने बोला, आई हैव नेवर थॉट समथिंग लाइक आई कैन नॉट डू। हमेशा जो मेरे सामने आया एनी डिफिकल्टी आई से दैट आई कैन। सो मेरे मैसेज सबके लिए यही है कि वो लोग ये सोच में ना रहे कि मतलब वो सोचे कि हम नहीं कर सकते, हम घर से कुछ कर सकते हैं और हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। दैट्स माय मैसेज, दे शुड नेवर थिंक अबाउट दिस एंड वी कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू फॉर साची बात। हौसलों में अगर उड़ान हो तो उड़ान कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ साची बात के लिए मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। हमारे साथ हैं प्रियांक पाहुजा जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार जी। हाँ सर, बताएं आज के कार्यक्रम को लेकर के किस तरह से आपने इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की, बताएं। देखिए, ये जो किताब की जो पब्लिकेशन थी, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी ने शुरू की थी सन 1980 के अंदर। ये भी एक छोटी सी घटना घटित हुई। बेंगलोर में एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी, तो उसमें एक बच्चे ने टाइम क्लॉक किया जो कि ऑफिशियल टाइम था नेशनल रिकॉर्ड का, पर उसका वहाँ पे कोई डिटेल नहीं था कि वहाँ वो जो उसने टाइम निकाला है वो नेशनल रिकॉर्ड है या नहीं है। इतना पता था कि वो उसने रिकॉर्ड क्लिक किया है, क्योंकि उस ज़माने में ये टच बोर्ड टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता था, कुछ नहीं होता था। तो वहाँ पे संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी के जो सपुत्र थे, गेस्ट बन के आए थे। तो उन्होंने वहाँ मेरे फादर को कहा कि एक ऐसा बुलेटिन होना चाहिए जो कि स्विमिंग के सारे रिकॉर्ड्स को बनाए, मेंटेन करे, जो हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा मेंटेन होना चाहिए। तो इस बात पे इस उनके कहे हुए शब्दों ने मेरे फादर के ऊपर ऐसा जादू किया कि उन्होंने ये किताब निकालना चालू किया। और जब ये किताब निकली तो बदकिस्मती से संजय गांधी जी का किताब निकलने से 2 दिन पहले ही देहांत हो गया। ये किताब 1900 जब संजय जी की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले बन के तैयार हुई थी, और उसके 2 दिन के बाद ये दुखद समाचार आया कि उनका एयर क्रैश में निधन हो गया। और वो किताब वही आके रिलीज करने वाले थे, पर भगवान को मंजूर नहीं था, तो शायद ये काम नहीं हो पाया। लेकिन उनका वो एक करिश्मा था कि जाते जाते भी हिंदुस्तान की राजनीति को 2 चीज़ें दे गए। एक तो मारुति गाड़ी, जो कि हमारे देश का बच्चा चला रहा है, ये भी संजय जी की देन है। दूसरा,
स्विमिंग की जो रिकॉर्ड बुक है इसका भी आइडिया देने वाले श्री संजय गांधी मेरे फादर को थे, और तब से उन्होंने ये किताब निकालना चालू किया और आज इसके 42 एडिशन पूरे हो गए। तो उनका बड़ा इस तरह का एक इंस्पिरेशन काम था संजय जी का कि वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से करते थे, और उनका जो काम है आज भी भारतीय राजनीति में लोगों को बहुत याद है। जैसे जनसंख्या कंट्रोल है, और आपका ये इंदिरा आवास योजना है, गरीबी हटाओ योजना है, ये आपका नसबंदी की योजना है, और ये जहांगीरपुर की जो कॉलोनी है ये बताने वाले, मतलब दिल्ली के अंदर जितने काम संजय जी ने किए हैं मैं कहता हूँ पीढ़ियाँ उन्हें याद करेंगी। बहुत बढ़िया सर, उम्मीद पर बहुत कुछ कायम है, और आज वर्ल्ड ओलंपिक डेज भी है, तो हम यही कामना करेंगे कि हमारे देश में भी ओलंपिक गेम्स हों। और इसी के साथ मैं अब आपको मिलवाता हूं डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा जी से, जो कि श्री राम कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर होते हुए भी वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रही हैं अपने बहन और भाई के साथ मिलकर के। और आज के इस कार्यक्रम को भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया। लगातार ये जो सर वी.के. पाहुजा जी हैं, उनके समय से जो पुस्तक का विमोचन चालू हुआ 1980 से, और आज तक लगातार हर साल वो पुस्तक लगातार छपती आ रही है और उसका विमोचन हो रहा है। तो मैडम बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा नेक काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। इसको चलाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब पापा थे तब तक मैं सिर्फ एक सेक्शन इसका करा करती थी उनके साथ और को ऑथर थी, बट ये तो नहीं सोचा था कि एक दिन खुद से चलाना पड़ेगा सब कुछ। बट वो अपने जीवन काल में 35 निकाल के गए, और हर साल एनुअल पब्लिकेशन निकालना, और वो उस टाइम से इस पे काम कर रहे हैं जब सिर्फ टाइपराइटर थे, इंटरनेट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। तो मैं उनका योगदान बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उस स्तर पे उन्होंने इंडियन स्विमिंग को प्रमोट किया जब कुछ था ही नहीं हमारे देश के पास। हमारे लिए तो फिर भी ये है कि इंटरनेट की सुविधा है, हम लोगों को फॉलो अप कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट्स को ले सकते हैं। बट वो इंसान अपने हाथ से लोगों को चिट्ठियाँ लिख लिख के भेजा करते थे, रिजल्ट भेज दीजिए, ये कर दीजिए। सो कंपाइल करना बहुत चैलेंजिंग काम है। भगवान की कृपा से हर साल 23 तारीख को निर्धारित दिन उनका जो हमेशा से रहा है उसी पर रिलीज हुआ। बहुत बढ़िया। लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन मैडम अपने सपनों के साथ अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। और मैडम आप जैसे जो कला और जो खेल के जगत में जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी लगातार हर साल प्रोग्राम करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग आते रहिए, और जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। और जितना ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करेंगे, उतना ही आपको बढ़ावा मिलेगा, आगे का आपका मार्गदर्शन होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मत छोड़िए, लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए, अपने सपने पूरे कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी कार्यक्रम के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से आप सभी से विदा लेता हूँ। साची बात के माध्यम से आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।